हेलो फ्रेंड्स, आपका निरंकारी वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो लिंक में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर सॉलिड स्टेट पे चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो लिंक में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स के बारे में बताया था, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। आयनिक सॉलिड, मेटलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड्स के बारे में चर्चा किया था। इस वीडियो लिंक में हम लोग क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में चर्चा करेंगे। आज की मेरी जो हेडिंग है वो है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस और स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। तो देखेंगे कि क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस क्या होती है। यानी कि किसी ठोस के अंदर उसके घटक कणों की एक नियमित ज्यामितीय पैटर्न व्यवस्था, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अगर शॉर्ट रेंज ऑर्डर है तो वो क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर घटक कणों की एक नियमित लॉन्ग रेंज, बहुत बड़े रेंज में घटक कणों की ज्यामितीय व्यवस्था है तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि स्पेस लैटिस क्या है। स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। Space lattice is a regular repeating arrangement space lattice is a regular repeating arrangement of points. Regular repeating arrangements of points in space. It is a regular repeating arrangement as it is a regular repeating arrangement to describe the space lattice completely. To describe the space lattice completely, we can choose a small part of lattice which, when repeated in different direction, produce the complete स्पेस लैटिस। यानी कि एक छोटी सी यूनिट आप ले लें और वही यूनिट एक बड़े एरिया में अरेंज की जाए। जैसे हम क्या करते हैं, एक ईंट लेते हैं और ढेर सारी ईंटों को लेकर के हम 3D स्पेस में उनको क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ईंटों का जो ढेर बनेगा, जो एक डेफिनेट पैटर्न बनेगा, वो स्पेस लैटिस कहलाएगा। और जो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज अ ब्रिक्स, जो ईंट है, वो उसकी क्या कहलाएगी, यूनिट सेल कहलाएगी। To understand space lattice and unit cell, we shall discuss first 2-dimension and 3-dimension lattices. So we'll describe 2
dimension lattice, 2-dimension lattice, द्विविमीय. A 2-dimensional lattice is a regular arrangement. A 2-dimension lattice is a regular arrangement of points in the plane of arrangements of points in the plane of paper. दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि हम किसी सतह पे उसके लंबाई और चौड़ाई के अंतर्गत यदि ग्राफिकली बात किया जाए तो यूनिट्स को हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे समान रूप से क्या कर देंगे, फैला देंगे. The units we suitably choose 4 points and connect them to obtain the unit cell. In some cases, the unit cell may have an interior point also. Such unit cells are called centered unit cell. The unit cell does not contain any interior point. It is called primitive unit cell. There are 5 types of 2-dimensional lattices. So, we choose 4 points. We suitably choose 4 points and connect them to obtain the unit cell. Obtain the unit cell. In some cases, interior point also contain such a type of unit cell called centered unit cell. Centered unit cell. The figure becomes like this type: A, B, C, and D. The centered unit cell, that is a point D. Here points are like this type. The unit cell that does not contain any interior point. The unit cell that does not contain any interior point. Called primitive unit cell. Unit cell. Two-dimensional lattices are often seen. Two-dimensional lattices are seen as a tiles on the floors. Now we'll see 3-dimensional crystal lattices. 3-dimensional
crystal lattice. The constituent particle of a crystalline solid, the constituents particle of a crystalline solid are arranged in a definite fashion, are arranged in a definite pattern in the three-dimensional space. In the three-dimensional space यानी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई यानी ईंटे का एक क्या लग जाएगा, चट्टा लग जाएगा। इसमें कुछ ईंटें लंबाई में होंगे, कुछ चौड़ाई में, और उनकी क्या एक ऊंचाई की एकता बनेगी। ये आपकी 3D क्रिस्टल लैटिस बनेगा। Such a regular arrangement of constituent particle, a regular arrangement of a constituent particle, that is atom, atoms or molecule, that is atoms, ions are molecules of a crystal in a three dimension, of a crystal in a three dimension space is called crystal lattice. Dimension in space is called crystal lattice. Some characteristic of crystal lattices are as follows. So our heading is characteristics of crystal lattices. Each point in crystal lattice, each point in crystal lattice represent a constituent particle, a constituent particle, maybe an atom, maybe an atom, ion or molecule. Each point in lattice is called, second point, each point in lattice is called lattice point, lattice point. The points are joined by lines just to represent the geometry of lattice. So we will describe about unit cell. What is a unit cell? एकक कोष्ठिका क्या होती है?
unit cell. Unit cell. The smallest three-dimensional portion of a complete lattice. The smallest three-dimensional portion. Three-dimensional portion of a complete space lattice of a complete space lattice, which when repeated over and again, which has repeated over and again in different direction, in different direction, produce the complete space lattice. Produce the complete space lattice is called unit cell. Is called unit cell. The unit cell may be considered as unit cell may be considered as fundamental building block. Fundamental building block of the crystal lattice of the crystal lattice, because the lattice can be constructed by stacking the unit cell. Stacking the unit cell. Now we will see parameters of a unit cell. Parameters of a unit cell. Its dimension along the three edges. But first, its dimensions along the three edges, that is A, B and C. These edges may or may not be mutually perpendicular. These edges may or may not be mutually perpendicular. यानी क्रिस्टल की साइड्स. दूसरा, एंगल बिटवीन द एजेज. एंगल बिटवीन द एजेज, कोरों के बीच का कोण
angle alpha is the angle between edge B and C. Angle beta is the angle between edge A and C, and angle gamma is the angle between edge A and B. Thus, a unit cell is characterized by 6 parameters. Thus, a unit cell may be characterized by 6 parameters, that is axial length AB and C. Axial length AB and C, and axial angles alpha, beta and gamma. Now we will describe about types of unit cell. So I will describe this link in my next video. So wait for my next video. दोस्तों, यदि मेरा कंटेंट आपको पसंद आया है तो आप मेरे कंटेंट को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस को और अधिक एनर्जाइज्ड होकर के आप तक पहुंचा सकें और आपके एम में सहायक साबित हो सके, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है 2 ईयर प्रोग्राम फॉर नीट। तो दोस्तों, अभी हमने क्लास 11th और क्लास 12th दोनों को साथ लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस साल भी नेट की एग्जाम में बैठेंगे। तो मेरा प्रयास है कि वो अगर वो इस साल नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो अगले साल वो श्योर एंड सर्टेन वो क्लियर करें। धन्यवाद।